हरे कृष्ण एवरीबॉडी, वेलकम टू इन्फिनाइट इंस्पिरेशन। आज की हमारी स्टोरी है बहुत ही एनकरेजिंग एंड फुल ऑफ लाइफ। दिस आई एम सेइंग बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी न्यू टू मी आल्सो। आज हम बात करेंगे फाइनेंस के बारे में, एक छोटी सी गुड़िया से जो जिसने मुझे बहुत सरप्राइज किया है। सो नॉट टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम, we'll start the show. Hare Krishna. Hare Krishna. How are you? I'm great. How are you? I'm good, thank you. So we would like to know about yourself. Please give your introduction. Yeah, I'm Swara Kulkarni and I'm 16 years old and I'm a day trader. I even invest. This is about me. This is our So topic. you've just finished your 10th exam, right? Yes. Okay. So how did this journey of money making start? Basically, I'll just tell you the idea what the show is based on. Her mom is my friend. So one day she was saying, I'm just very busy. I said, okay, busy for what? I have to take my daughter for a class. I said, okay. I said, which class? She said, shares. I said, shares? How old is your daughter? Oh, she's in class 10. I said, shares, and she's doing it. I was like very amazed. So I was very impressed कि आजकल के बच्चे इतने cautious है for their growth. They know exactly what they want to do in future. So how did it start? Well, it started from when I was almost 13 years old in 6th class. My father always used to watch that Z News every early morning. When I used to wake up and I was like, Baba हे का है? All I knew is कि वो जो ऐसे चार्ट्स होते हैं वो सिर्फ डॉक्टर्स के होते हैं हार्ट बीट्स के. And I one day, out of curiosity, I asked my Baba. Baba is basically my father. That you're a banker, and why you're so interested in looking at these charts? These are based on healthcare, right? And then he told me that it's not about healthcare; it's about market. And from that day, my curiosity grew, and I made a decision to make my career into that field. Wow. But wasn't it too early for you? I mean, were you very, I would say, were you able to take that knowledge so easily? Yeah, Or it was difficult? it was difficult, but when you really love to do something or you're eager to know what it is, it becomes easier. Yeah. And I think, see, we all believe in DNA में सब कुछ आ जाता है. So probably you got it from Yeah, your it's dad. my Baba's. So you got it from your dad as a gift. It obviously comes like my mom is a very good cook. So it came in my DNA also. So I love to cook also. And it's already going in my daughter who's just 7. She loves to cook from now only. I said, just relax. It's a long way to go. Okay, so then how did you manage your school and your knowledge about chess? I'm sure कि वो बस स्क्रीन देखने से तो नहीं होता, वो उसमें काफी कुछ पढ़ना पड़ता होगा, It's a analysis long करना journey. पड़ता होगा. Well, I'm really thankful to my parents because उन्होंने बहुत support किया in this journey. School और ये साथ करना थोड़ा सा hurdles था उसमें, but it eventually happened क्योंकि passion था stocks के बारे में बहुत ज़्यादा and it didn't stop me. तो स्कूल जब तक मैं 8th में वगैरह थी, रोज एनालिसिस करना, चार्ट्स देखना वगैरह वगैरह, एंड देन एक दिन मैंने सोच लिया कि अब ट्रेड ही करते ही है. एंड आई टॉक टू माय फादर अबाउट इट एंड ही वाज टू ग्लैड. तो उन्होंने एनरोल मी इन वन स्टॉक मार्केट क्लास एंड फ्रॉम देयर माय जर्नी स्टार्टेड अबाउट बीइंग अ ट्रेडर. तो तब मैं 8th में थी एंड फ्रॉम 8th standard, like about 15 years old, I became a trader. And now I'm 16. So now, were there other kids also doing it, or you being the unique one? No, I think for me, it's the first one is being at such early age. ना मतलब मेरे एज के तो भी नहीं थे, बड़े होंगे बड़े थे. हाँ, बड़े. क्योंकि हम लोग के टाइम पे तो मेरा डैड हम लोग को कहाँ शेयर है. फिर तो आज भी शेयर्स का समझ नहीं है, पता नहीं क्या करते. नुकसान हो गया, प्रॉफिट हो गया, अभी गिरने वाला है, अभी उठने वाला है. मैंने कहा इतना स्ट्रेस नहीं ले जाए, because I know people who are into the shares and all that. And if you know the tricks, it's very easy to make the money, right? It's not about trick, it's about how hard you work, how hard you analyze, how much time you give to market. It's not a lucky draw business.
No, many people I think do that way also, right? Yeah, and then they suffer a loss and they are like, ये तो सट्टा बाजार है. But it's not like that. You need to analyze it. You need to make strategies. You have to give half of the day, maybe more than that, for just one trade, and then you'll make a little amount of money as an early trader, newbie. But when you grow, your experience counts. Yes. So was it difficult to manage studies and this together, or you were able to cope up? Like earlier, it was little hard, but later, eventually, more हो गया cope up थोड़ा. I think because हर चीज जब तक सीखते नहीं है तब तक हार्ड ही हाँ, लगती है, hard ही चाहे वो लगती कुछ है. भी हो, हाँ, exactly. चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे कोई भी बात हो. और because you had the passion, so I'm sure the journey, of course, It hurdles wasn't होंगे, smooth, but but then because you loved it, so it would not have been so tough as it should be, right? yes, sometimes my grades compromised, sometimes my share compromised, but eventually it get balanced. So were your parents upset when the marks were being compromised? No, not really upset, but they were happy that I'm growing in some new field. It's always not about how much you score, it's about how much you learn. You And should when grow you also. yes, and when you simultaneously earn and learn, that's the best growth. That's true, that's true. So a person like me, हम लोग को तो शेयर का नाम से भी डर लगता है. I think मैक्सिमम लोगों को डर लगता है, right? तो क्या है ये डर हम लोग का? There is like most of the people look it as a just पैसा आना चाहिए. हम कुछ नहीं करेंगे, शेयर्स लेंगे, 50% ऊपर जाने का चांस है, 50% नीचे आने का चांस है, लक आजमाते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. प्रॉफिट और लॉस के 70-30 चांसेस होते हैं अगर आप ठीक से एनालाइज करो और स्ट्रैटेजीज के थ्रू चलो तो प्रॉफिट के 70% चांसेस होते हैं. और ऐसे नहीं कि हर बार आपकी स्ट्रैटेजी वर्क करे, तो 30% चांसेस लॉस के भी होते हैं. तो आपने लॉसेस किए ऑफकोर्स सीखते वक्त हर कोई गिरता है. और प्रॉफिट्स भी किए होंगे फिर तो कैसा है मतलब आप टूटे थे जब भी लॉस किया था या जब भी प्रॉफिट किया था तो बहुत हवा में उड़ रहे थे ऐसा कुछ था या it's based on psychology. You know, many of the people लक ट्राई करने के लिए आते हैं, लक उनका काम कर जाता है, 10 के 20 बना देंगे वो, एंड वो 20 के 20 इन्वेस्ट कर देंगे और फिर वो 20 के 0 हो जाएंगे. एंड देन this game is about psychology more than money. You have to play with your psychology before playing with your money. Yeah, but did it overrule you? आपको इफेक्ट हुआ उसका प्रॉफिट या लॉस का? इफेक्ट तो होता है, बट when you calmly think about it, तो लॉस तो हर चीज में होता है. It's a part of it. It's a part. But when you invest with a plan, when your portfolio is manageable, you don't suffer much. So have people approached you to invest? Not yet, because I'm really focused on my investment, on my money. Okay. So you're already earning now? Yes. That's a good one. At this age you're already earning also. And that too like a nice decent earning. So आजकल की जो आपकी जनरेशन के बच्चे हैं for them to spend is very easy. बाप का पैसा है खर्च करो. आपके साथ ऐसा होता है कि पापा देंगे खर्च करो उड़ा लो या वो अवेयरनेस आ गई कि नहीं पैसा बड़ी मुश्किल से कमाना है. Awareness तो है, but my father always used to do one thing. अगर मुझे कुछ चाहिए, for example, I want a dress. It cost about 3,000, 4,000. They are like, fine, I'll give you 3,000 or whatever amount of money you want. You invest them. Okay, you make them double. Take your time, and then give me my money back. And तेरे returns के साथ तो जो करना है कर ले. Wow. It's that simple. That's good. So at the same time, you're getting your desired dress also. At that time, you're actually making money. And But not you know, even when taking you favors. when you get that returns now, you won't spend that. You will reinvest it. Oh wow. Because it's your money, right? You won't spend it. तो लेकिन आजकल के बच्चे तो ऐसा नहीं सोचते, उनको तो सब कुछ चाहिए. Right. तो फिर उनको क्या करना चाहिए? आजकल के जो बच्चे चल रहे हैं, तो देम यू नो
Actually, everybody thinks that money comes very easy. Of course, आजकल खर्चे ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, बहुत कुछ अवेलेबिलिटी हमारे टाइम पे उतना नहीं था. तो ये जो बच्चे एकदम बिंदास होके मांगते हैं, हम लोग को डर लगता था कि पापा से पैसे मांगने. हमारे टाइम पे ना वो 25 पैसे मिलते हाँ, थे टॉफी के लिए, वो भी 3 बाई में, तो उसमें ही आना चाहिए, वो उसमें ही मिलना चाहिए, एक में एक तो पक्का रहेगा उसमें. So actually we never wanted that money, but yeah, of course we used to get the pocket money कि आज ये खा लो, it's okay, achieve it. बट आजकल के बच्चों के बहुत सारे डिमांड्स है, तो क्या सही आपका इसको, because you being a teenager. when like my cycle is kind of different. I believe in my own money rather than borrowing it from anyone. Doesn't matter if it's my dad. Now you make your own money and you'll really know कि where to spend. Now when you make money, तुम फिजूल के खर्चे नहीं करते हो. तो ये अवेयरनेस एक्चुअली सबको आनी चाहिए ना आजकल के बच्चों को. मैं वही कहती हूँ, आप छोटा मोटा काम बड़ा मत करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए पैसा आता कैसे. एज पेरेंट्स ऑफकोर्स हमारी ड्यूटी है सब खर्चा देखने की, बट देन एक्सेस डिमांड इज नॉट वर्थ इट, बिकॉज बंदा कमाने वाला तो उतना ही सैलरी मिलेगा, डिमांड बढ़ जाएगी तो थोड़ी सैलरी बढ़ जाएगी. दैट्स व्हेयर वी हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रेस. So, what about your friends? Like, you have friends in the same industry or अलग दुनिया है आपकी? Like it's not about I'm having a best friend or that group B. No, I have friends, but I have friends with same mentality. Like they are older than me. Like भैया दीदी ऐसे सब है, क्योंकि वो मेरे फील्ड में है. So they वो guide मुझे you. You have हाँ a common topic. राइट हाँ दे हेल्प मी टू ग्रो, दे डेवलप मी, वो मेरी नॉलेज बढ़ाते हैं. तो ऐसे दोस्त है मेरे. Yeah. तो अभी आप ये सब करते तो आपके फ्रेंड्स को ऐसा नहीं लगता वही कुछ अलग ही भागते हैं नाचना? लगता है मैं नहीं होती हूँ उनमें. तो आपको नहीं इफेक्ट चाहती. होता है कि मेरे दोस्त नहीं है, आई मीन दैट वे, यू नो. अगर आप मुझे 7-8 महीने पहले पूछते तो मेरा आंसर शायद हाँ होता कि अफेक्ट होता है. बट नाउ when you know your self worth, it doesn't affect you. So you're more focused about your life now. Yes. Actually, see, आजकल जितना कॉम्पिटिटिव है, तो obviously 10th grade means you have to really focus about your life. 10th है, 12th है, the last final year. आजकल तो आप लोग का ये सब होता है, हमारे लिए तो टीवाई बहुत हो जाएगा, unless extra पढ़ने का शौक है. मैं तो टीवाई में बस हो गई. And but yes, these are the important years where you really have to think about what you want. You should never stop learning. Of course, वो तो है, but these years are the most important years of life, because 10th result will give you the, you know, field to choose कि science करना है या commerce करना, because हमारे टाइम पे तो कुछ परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती थी. आई एम श्योर आप लोग का भी होगा, आप लोग का तो 90s में भी कम लगता है. Exactly. तो अगर आपने फोकस नहीं रहे और वो रिक्वायरमेंट नहीं पूरी, तो आपको ही दिक्कत आएगी ना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, बिकॉज एज इट इज इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव एंड थिंग्स आर नॉट इजी. एक्चुअली उस जमाने में भी इजी नहीं था, लेकिन आजकल दिख के आता है कि बच्चों के ऊपर बहुत स्ट्रेस है. हमारे ऊपर पता है क्या स्ट्रेस होता था? मैं रहती थी, मेरा घर 15 मिनट्स 20 मिनट्स मेरे को रोज वॉक करना पड़ता था. मतलब अगर मुझे कॉलेज जाना है तो 20 मिनट्स मुझे बस स्टॉप तक वॉक करना है. अगर बस मिली तो ठीक है, नहीं तो मैं गई. मतलब दैट बस वाज अ डायरेक्ट बस टू कॉलेज, सो वी हैव टू रीच. तो अर्ली मॉर्निंग जस्ट रन एंड रन, तो पूरा दिन एक्चुअली हम लोग भागते थे. देन अगेन व्हेन यू कम बैक फ्रॉम कॉलेज, अगेन यू हैव टू वॉक होम, अगेन इफ यू आर गोइंग फॉर सम क्लासेस, अगेन यू आर वॉकिंग. सो दैट वाज अ डिफरेंट लाइफ फॉर अस. बट फॉर योर आर ब्लेस्ड कि ठीक है, फैसिलिटीज है, पिक एंड ड्रॉप एंड ऑल दैट. I never had anybody to pick me and drop me even during the school hours. I think 1.5 किलोमीटर हम walking करते थे with all these big bags. मैं मम्मी को कितना थक जाते हम लोग, ये लोग भाग ही नहीं देते थे. मैं पूरी लाल होता है. तो ये कैसा है, मतलब आई एम श्योर यू वुड बी लिसनिंग फ्रॉम योर मॉम एंड आल्सो, सो यू डू नॉट फील कि लाइफ इज इजी फॉर यू ऑल और ट्रिकी ही है? For every individual, they have their own struggles, right?
uh, you millennials. Okay, we prefer you as a millennials and we as a Gen Z. तो आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, लाइक मनी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, बट अभी फैसिलिटीज बहुत बढ़ गई है, तो जो स्ट्रगल आपने किया वो हमारे लिए कम हो गया है। लेकिन आप लोग का कॉम्पिटिटिव बहुत बढ़ा। हाँ, वो बहुत बढ़ गया। हमारे टाइम पे इतना नहीं था। हम लोग एवरेज स्टूडेंट बड़े खुश होते थे पास हो गए पेड़ निकालो। बाकी जिनको बहुत बहुत कम बच्चे होते थे कि सच में उनको उतना परसेंटेज Average दिस is इज good. आदि पब्लिक ऐसी थी, बस पास हो गए, ग्रेजुएशन हो गई, खत्म, जॉब कर। आप लोग के पास इतना कुछ है। समटाइम्स आई एक्चुअली मुझे स्ट्रेस हो जाते हैं कि कितना बर्डन है, तो करो आप लोग कोपा भी इतना चाहिए। 90s तो आप लोग के लिए जोक है, राइट? सो नाउ व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन अबाउट द रिजल्ट? व्हेन आर यू एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट? Okay, मेरे रिजल्ट्स जून में, इंडिया जून में आ जाएंगे 10th के। I'm I'm a commerce student. Okay, so I am not expecting much. Above 90 is good for me. So now, when you know that this particular percentage is going to be, आपका आएगा, तो क्या सोचा है आपने आगे? जैसे मैंने बोला, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड, मुझे मेरा पूरा करियर फाइनेंशियल फील्ड में करना है। बीइंग अ सीए, ACCA, दिस आर न्यू टर्म्स, ACCA वगैरह। तो आई वांट टू रियली जॉइन देयर, and stock market is always going to be my first love. So, so now you have to be like studying also and working more harder towards it. Yes. But I'm sure the way you're passionate about it, I'm sure you'll shine like a star. Thank you. And how do your parents feel that you're managing both together? They have the biggest contribution in my growth. My dad, my mom, they really have biggest contribution because they are the one who encourages me. Like, they are God for me. Yeah. And your mama is very, cool mama. Yeah. So I think she's your best friend also. Yes, she is my best friend. She's a wonderful person. I mean, Yeah. I barely talk to people in the building and all that, in the society. But anytime, I mean, almost every morning we meet up because I go to drop my daughter and she comes back from the yoga. Yeah, she's really sweet. Yeah, she's very, very sweet. As a mother, to support your child is the best thing to give to a child. Yeah, that's what she do. Because बहुत सारी women है ना, वो घर के इसमें इतना कुछ फंस जाती है ना कि वो नहीं टाइम निकाल पाते, बेचारी करना भी चाहती तो भी नहीं कर पाती। So that time you need that courage. Yeah. So she has that courage. And you have a sister also, right? And she's in which class? Now she's in 4th grade. Okay, so are you teaching her also about the chess? She is like bindas. Okay. She's not interested yet. She's really young for that. Yeah. I started growing my interest when I was in 6th grade, like 13, 14 years old. She is not even 10 yet. आ जाएगा, DNA में है तो आ ही जाएगा. And what is the best you've learned from your parents? Never give up. From my dad, he's a banker. Okay. And I've always seen him as my God, as my ideal person. Right? I want to be like him. And what about mama? Mama is really sweet. I like to have her nature. She's kind, she's sweet, she's polite with everyone, selfless, and I like that about her. It's very sweet. At least you know what qualities your parents have and how do they contribute. Life becomes very easy wherein जब हमारी फैमिली में हम सबका कंट्रीब्यूशन देखते हैं ना, तो आपकी जो नॉर्मली कंप्लेंट्स होती है ना फैमिली में, अब जैसे आप बच्चे हो, ठीक है, आजकल के बच्चों को बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं कि just example, they don't have time or they shout at us or whatever the reason be. Like me and my husband, we also try to give the maximum time and the best things to our daughter, not in the sense of finances or the best facilities, but the upbringing. Especially, he's always busy at work, but when he comes home, he also has his set of duties because she likes that when he comes home, I should listen to the bedtime stories. So that is his duty.
But during the daytime, I have duties too, so like schooling, classes, and then she wants to play with me. तो ऐसा जब भी वो फैमिली में कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस वाला, तो घर में बहुत मजा आता है. And I am really grateful for my mom. She sacrificed her job. She was engineer. She Wow. sacrificed her job for our upbringing, and she is the main reason why I am here. Moms are the best. Yes. मॉम्स का ऐसे कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आ सकते थे, Actually, इसलिए माँ बने. माँ बने. इट इज वेरी ट्रू. जब तक हम लोग मम्मी नहीं बनते तब तक वो मम्मी यार. ओ जब माँ मैं बनी ना तब मुझे पता चला कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, खुद को भूलना पड़ता है. कभी बाल बनाने का टाइम नहीं, कभी कुछ करने का टाइम नहीं. बट इट इज ओके, यू नो, व्हेन वी सी आवर किड्स हैप्पी, everything is like it's okay, and we really don't feel bad because families happiness, especially the children, you know, born out of you, when they are happy it means the world to the lady, and of course to the dad also. Why do they make money? For the family, right? So it is good that you're imbibing the good qualities in your life, and बहुत अच्छा. देखो ये सब अवेयरनेस अगर आपको इसी एज में है ना, तो आपको आपकी लाइफ को स्मूथ चलाने से कोई नहीं रोकता. लाइक इन माय एग्जांपल, मैं जब छोटी थी ना, मेरी मम्मी बहुत कुछ करती थी. Those days we used to have joint families and stuff. So always she used to be at work. I used to, क्या इंसान है. तो ऑटोमेटिकली मेरे में भी आता है. For me, when people come, I don't get nervous. It's very easy for me to cook or look after or arrange the house or whatever be it. तो आई थिंक वो ऑटोमेटिकली आपके डीएनए में आ जाती है. लेकिन ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अभी हो सकता है मैं दूसरा कुछ देती हूँ. माय मॉम हैज बीन लाइक, आई वुड से रॉन्ग वर्ड व्हिच इज नॉट supposed to be said. I would say that she's lived like a slave. I don't want to be like. आजकल के बच्चे ऐसे भी हैं, लेकिन वो स्लेवरी नहीं है, वो एक फैमिली के लिए कंट्रीब्यूशन है. क्योंकि अगर That's a selfless sacrifice. जब आप बच्चे लोग फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे लोग वो सारा उनकी लाइफ को ग्रो करते हैं ना, तो जो माँ ने सैक्रिफाइस किया ना, सच में इट इज ऑल वर्थ. Yes, it is. Like I have sacrificed my career for my daughter, but I keep doing something from home. As when she's away or in school, when she's at home, I have to be with her. तो ऐसे मेरा भी काम हो जाता है, उसका भी काम हो जाता है. And then she's very happy. My mom does this for me, so I am also happy कि मैंने भी अपने लिए कुछ किया. So that is very, that realization for the kids at this age is very important. I wish all the kids are like you. Thank you. Okay, so now when we talk about the generation of today, right? आजकल बच्चे बहुत रॉन्ग ट्रैक पे भी जा रहे हैं. तो आपको क्या लगता है, isn't it important for everybody to have a particular goal? In the sense, Of like, course it doesn't mean only shares, कुछ भी, Of course it is. लेकिन एक right track. You know, my parents always used to told me that you work, you grind yourself for 25 years until you turn 25. Until that, when you became successful now, when you grind yourself, when you work for yourself, you'll be successful. And after that, enjoy your life. No, and what people are doing right now, यार ये उम्र वापस नहीं आने वाली है, तो हम अभी एंजॉय करते हैं, बाद में काम कर लेंगे. मेरा थोड़ा उल्टा है, अभी काम कर लेंगे, बाद में एंजॉय कर लेंगे. See, as long as मेरा personal experience, as long as you are happy, nothing like this. आप जो भी करो ना, अगर आपको उसमें मजा आता है. Self love is important. When you focus on yourself, everything turns into your favor. Even market turns into your favor. So how is it? Because I've heard people and I've been with people who are like, market है, बहुत focus करना पड़ेगा, या actually they not take stress, but is it a real stress कि आपको उतना concentration focus चाहिए? Concentration और focus तो चाहिए, but stress आप दिमाग में लेते हो. मतलब आप अगर stress ये word ही हटा दोगे and you look it like a enjoyment, तो आपको stress नहीं होगा. And my father always used to tell me that
When you start taking tension, you kill your talent. And that's what the sentence I Yes, work on. yes, yes, yes. Because stress is nothing but actually आपका जो भी क्वालिटी है ना वो धीरे 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 आपको हाँ, डिमोटिवेट करेगा और आप जो चीज पे फोकस करना चाहते हो वो कर नहीं पाएंगे. सो हाउ इज इट लाइक इतना छोटा एज में आपको इतना अवेयरनेस है और age is just a number. wow. It's an excuse, I guess. ओके. तो भी आपका ऐसा कुछ है कि लोग आपको बोलते हैं कि हमें भी जरा क्लासेस करवा दो शेयर्स का है ऐसा शायद मेरे को भी आना पड़ेगा because I'm very bad at all this. My financial department is handled by me. I just sign. मतलब ये सब मेरा काम नहीं है. मैं घर संभालती हूँ बहुत है. फिक्स सब करो. Because I'm not comfortable. मैं आज तक जितने भी ट्रांजेक्शन है I am always stamped on my father or my brother or my husband. You know that financial DNA is from my father. So your mom doesn't like shares and all, It's not she doesn't like, but she doesn't trade. but she knows about it. हाँ. अच्छा. तो मतलब मजा आता होगा नहीं तीनों बैठ के से शेयर्स के गप्पे शप्पे लगाते होंगे. Yeah. Okay, I got to know from your mom that you all read at night, is it? Yes. 1 hour is our reading hour. Every day. Yes, every day. Wow. From 8:30 to 9:30, we all read. No devices allowed. तो काव्य पढ़ लेती है चुपचाप. Wow. चुपचाप तो नहीं, लेकिन पढ़ लेती है. मतलब उसका बीच बीच में चलता होगा मम्मा ये दीदी she calls you दीदी और बहन. नहीं, टाइप. So ये जो शेयर्स का है एंड स्टडीज का है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन. Yes. What is your say on that? Yes. You have to set up a routine. You have to focus on yourself. जो काम आपने कल किया है उसको 1% से आज अपग्रेड करना होगा. अप टू डेट रहना पड़ता है. लाइक मार्केट में तो भी कि कल क्या हुआ, कंपनी की क्या न्यूज आई, फंडामेंटल्स कैसे, वो उस पर बहुत डिपेंड करता है मार्केट न्यूज पे. वन फॉल्स न्यूज, मार्केट कोलैप्स. यस. तो आपको ये सब हाँ. रोज का रोज इसमें लिंक अप रहना पड़ता. तो अगर आपको चिल मारना हो तो मैंने बोला 25 के बाद चिल मारेंगे. नहीं अगर ऐसा कोई दिन आता है so next day you would not be trading, right? Yes. Or is it important that आपको रोज का रोज वो it's like a daily routine, daily Daily dose. routine. No one can disturb me in that. So you've accepted that. Yes. It's 9:15 to 3:30. It's just me and my market, my screen, my money. That's it. No one else. Oh wow. Every day you do that. And once the schools and I mean the college starts then Then we have got many options. Like there is forex. I trade in forex also. That market is open up at night also. So you can make money from there too. तो फिर ये आपको सब टाइम टेबल आपका बैलेंस करना पड़ता है स्टडीज का तो आप कर देते हो. स्ट्रेस नहीं आती. स्ट्रेस इज जस्ट अ वर्ड. Stress is just a word. वो सिर्फ दिमाग में होता है. Your mind is like a magnet. You attract what you think. तो आप अगर बोलोगे स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस ही आएगा. अगर बोलोगे प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ही आएगा. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. तो ये अभी कैसा होता है लाइक शेयर्स में ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती है आप लोगों को सजेशन देते हो या अभी तक आप सिर्फ खुद ही काम कर. You know, ऐसे नहीं है कि टिप्स टिप्स आपने वर्ड सुना होगा शेयर मार्केट में, राइट. बहुत लोग हैं जो टिप्स के थ्रू ले लेते हैं. ठीक है, दोस्त ने बोला शेयर ले लिया, ऊपर गया तो किस्मत हुई. ठीक है, बट नीचे गया तो दोस्त को ब्लेम करोगे, राइट. इट्स नॉट लाइक दैट. आपने सुना ना, आप खुद का एनालिसिस करो. आपको क्या लगता है कि क्या होगा. अगर आपको पॉजिटिव एनालिसिस है then buy the trade. अगर आपको लगता है कि नहीं ये जैसे उसने बोला वैसे नहीं जाएगा, मत खरीदो. दैट्स द मोस्ट. टिप पे भरोसा मत करो. खुद का नॉलेज बहुत खुद का, इम्पोर्टेंट हाँ, एनालिसिस exactly. करना. ना टिप लो ना टिप दो. सिंपल. इट्स अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मंत्रो टाइप्स. खुद का दिमाग यूज करना इज मोर बेटर. आजकल वैसे भी आई मीन मेरा फाइनेंशियल इसमें बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हुआ है.
आप इजीली लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर देते हो, इन्वेस्टमेंट्स कर देते हो, फिर जो बैंक बचती है एंड देन दे डोंट इवन गिव अप योर मनी. वो पैसा तो देते नहीं, उल्टा आपको भगाते हैं उनके पीछे. मेरा तो बहुत बुरा Don't trust एक्सपीरियंस है. people. Don't trust people. आई डोंट नो. देखो हम लोग ना बहुत सिंपलिसिटी में रहते हैं, तो हम लोग को लगता है किसी की मदद कर रहे हैं तो दे दो, बट आई थिंक इट्स नॉट फॉर्मूला फॉर टुडेज. Really आई मीन आज की तारीख में आप अपने काम से काम रखो, वो ज्यादा अच्छा है. better. तो ये जब आप ये सब करते हो, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने नहीं मिलता है, या जैसे दूसरे बच्चे लोग Mm. क्लबिंग, Mm. पार्टिंग, so you don't get time for that. No. You okay with that? Yes. Because I know I'm different from them. So you And never then miss it. no. That's your choice you've made for Yes. your life. That's very good. You are actually an inspiration for the young generation because आप लोग की जो एज है ना, उसमें कैरिड अवे होना बहुत आसान है. इवन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, हम लोग मेरे को रूल्स की बुक मिली थी कि इससे बात करना है, इससे बात नहीं करना है. तो मैं आधा टाइम तो डरती थी कुछ करूंगी तो घर पे बैंड बज जाएगी. नॉट दैट they were doing it to fear me or get me scared मोड पे, ऐसा नहीं था. बट हम लोग के टाइम पे बहुत अलग थे. So they were just basically trying to protect हम लोग रात को कभी घूमते ही नहीं. अगर आपको घूमना है तो हम लोग समर वेकेशन में सारी एक्चुअली टोलियां निकलती थी किड्स, मॉम्स की गैंग, बच्चों की गैंग, एंड वी यूज्ड टू बी लाइक, आई लिव्ड इन अ सोसाइटी विद सो मेनी किड्स, सो वी हैड गैंग्स. मतलब हर एक एज ग्रुप है ना 8-10 बच्चों का, तो पूरे पूरे बच्चे सारे साथ में निकलते. तो ऐसा था. बाकी स्कूल के दिनों में तो आपको 8-9 बजे तो So that. एक्चुअली आप अपने घर पे हो, आप पढ़ रहे हो, क्या करो, लेकिन बाहर यूजुअली हम निकलते ही नहीं थे. आजकल जो ये मैं सच बताऊं, मैं अभी तक डिस्को में एक बार में दुबई में गई थी, and I hated it because the way they were drinking and smoking, I was suffocated. मैंने कहा लोगों को ये क्या मजा. मेरे को आज तक पता नहीं नासिक में क्लब है भी या नहीं है, डिस्को है भी या नहीं है, because it is not my cup of tea. I'm not in. Even not mine. क्या है, आप लोग उस धुएं में मर रहे हो. I'm sorry to say that, but then क्या है उसमें? Intoxicated. What are you doing? You don't know. Have clarity. I mean, it's very impressive कि आपको अभी से ही लाइफ के बारे में क्या. People, kids like you only can set an example. If you are not focused in, मैं आज इस एज में मुझे पता है मुझे आगे क्या करना है. I don't पता care. होना चाहिए. हाँ, मेरे को आज भी पता था. मैं मेरे को I'm enrolling for this class. He keeps saying, how many classes do you do? I said, it's okay as long as I'm growing. Maybe probably till the last day of my life I'll keep learning because life is a process of learning. You cannot stop it. अब जैसे अभी आप मार्केट की बात, आप एक दिन में सीख गए तो आपका पूरा लाइफ चलेगा. आपको रोज मैंने बोला ना 1% से ग्रो करना पड़ता है. रातों रात कोई ग्रो तो नहीं होगा. It's always like कि you should be better than yesterday. And there's always best version of you. So does your reading also keep you aloof in a way? मतलब आपका एक अपना ही वर्ल्ड बना हुआ है. Exactly. Yes. So see, you have your reading time, you have your share market का time. I'm sure आपका पढ़ाई का भी time होगा. Then I see you going out with your mom also. Probably that's a family time. Yes. So you've created your own world. It's my own world. Very good. Very good. I keep telling my daughter. Sometimes she says, "Mom," I said, "What is a bored word?" ना आप लोग के पास टॉयज है, हमारे टाइम पे टॉयज नहीं होते थे. हम लोग वो चम्मच में कटोरी से खेलते थे, फिर कुछ कुछ करते थे, बहुत नहीं होते थे हम. और तभी हम लोग को फ्रीडम था कि हम एक दूसरे के घरों में जाते थे. तभी सोसाइटी में बच्चे खेलते थे. आजकल बच्चे खेलते नहीं. तभी आप लोगों को टाइम का जैसे टाइम फ्रेम है वैसे आपको चलना पड़ेगा. सो वी कैन नॉट चैलेंज द सिचुएशंस और द लाइफ एज इट इज. यू हैव टू, कैसे कहूँ मैं, आपको अपने हिसाब, आपको वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है. वक्त किसी के लिए नहीं रहता. And people, see, I'm sure people would be saying good or the bad about you also. She's not talking and blah 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 blah. आपका friends का ऐसा होता होगा, right? I'm not in their group. I'm sure it doesn't affect you. No, it doesn't. Like, I know who I am, so it doesn't affect me. Even I am the same. For me, I know where I'm right. For me, I know where I'm wrong. I don't wait for people's statement. क्योंकि वो लोग शायद अपने पर्सपेक्टिव ऑफ
But that perspective doesn't matter. हाँ मुझे पता है मैं क्या I only believe in one thing whatever I'm doing when I go back if at all I go back to God पता नहीं किधर जाऊंगी तो आपको जवाब देने के लिए आना चाहिए वो क्लैरिटी बहुत जरूरी है See, in this world you will learn you will have your career you will have your family ups and downs etc that is part of life but at the end of the day your conscious has to be able to give you the right answer whether you've done wrong whether you've done right or wrong whatever तो जिस हिसाब से आप चल रहे हो मुझे तो क्लैरिटी सुपर दिख रही है ओके सर ये समर वेकेशंस में क्या किया आपने ट्रेडिंग मैंने इस समर वेकेशंस में फॉरेक्स सीखा इट्स फॉरेन एक्सचेंज मनी एक्सचेंज तो वो मैंने नया किया तो ये एड ऑन हो गया आपके इसमें हाँ so you have to keep adding on things right and keep learning that's the most keep learning it's important so good that it's a very wonderful talking और आपको कुछ और शेयर करना है आपके एज ग्रुप के लिए हम जैसे एज ग्रुप के लिए जिनको शेयर से डर लगता है कि इट्स ओके आप भी ट्रेडिंग कर सकते हो इट्स नॉट अबाउट डर लगना बट अगर आपको सही नॉलेज हो मार्केट की विदाउट नॉलेज आप नहीं कर सकते हो कुछ लक मत आजमाओ वो नहीं काम करेगा हर वक्त आपकी एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी होनी चाहिए मार्केट के इसमें स्ट्रेटजीज होनी चाहिए आप कब ट्रेड ले रहे हो आप ग्रीडी नहीं होने चाहिए तो यू शुड नो वेयर टू स्टॉप इवन इन लाइफ यू शुड नो वेयर टू स्टॉप so basically you have to be wise yes in every way yes and when it comes to money you better be so now I'm sure you'll be really knowing how to save your money right I know how to invest my money saving is it's nothing सेव करके कुछ नहीं होने वाला एफडी एंड दैट डजंट वर्क जितना रिटर्न आपको एफडी देती है उतना रिटर्न शेयर मार्केट आपको एक दिन में देता है उससे डबल भी देता है इट्स जस्ट अबाउट योर स्ट्रेटजीज एंड योर प्लान्स योर डिसिप्लिन दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट So when you say discipline is required only for the shares work or for everything मार्केट के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू वर्क इट्स अबाउट वो बोरिंग काम आप कितने बार करते हो चार्ट्स देखते रहते कितने पैशन से करते हो क्योंकि वरना तो बोरिंग हो जाएगा yes. क्योंकि मैं मतलब I have not personally spoken to many people लेकिन people really enjoy also of course मैंने ऐसे भी सुना है कि कभी कभी वो स्ट्रेस आ जाता है क्योंकि मार्केट ऐसे बैड होने वाली कुछ ऐसे सिनेरियोस होते हैं हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है तो अभी से योगा प्रैक्टिस कर ले क्योंकि जब भी हम लोग अपने हेल्थ का ध्यान देते हैं मेरा पर्सनल मैं हमेशा लोगों को हेल्थ के बारे में पक्का कुछ ना कुछ बताती हूँ अगर आपकी हेल्थ ठीक है ना तो लाइफ ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी बिकॉज द वे वी आर लिविंग stressful life your body has to be taken for granted which is not good end of the day why do we make money or whatever we do why do we do to serve this body right अगर आपका घर है तो बॉडी को सर्व करना अगर आपकी फैमिली है तो you need the physical body even to pray you need the physical body yesterday only in my Bhagavad Gita class they said कि the body is very important for the soul journey आपकी आत्मा की भी जर्नी नहीं हो सकती आपकी बॉडी की भी when people just take their body for granted I mean the physical health of course the physical health is the body so I wonder कि just culpate मेरे को अच्छा लगता है चाहे वो चॉकलेट हो आइसक्रीम हो it is very easy to spoil your body but once it's spoiled इधर भी डिसिप्लिन चाहिए so you should market में भी people come with the psychology that 100% returns मिलते हैं डबल हो जाता है पैसा इट्स नॉट लाइक दैट 100% इज इन यू यू हैव टू गिव दैट 100% फिर मार्केट रिटर्न्स देगा बस नो योर 100% नो हु यू आर नो योर पोटेंशियल आई नो मेनी पीपल जो शेयर्स में बिल्कुल डूब जाते हैं आपको क्या लगता है आपके आपके इससे क्या है लाइक वो बिना प्लान्स के आते हैं a wise man without a plan is not better than a dumb man with a plan
No, you should always have a plan. ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं आ जाता लोगों को आता है. कि ये हमने इतना अच्छे से कमा लिया तो हम लोग That's what I'm talking about, psychology. Yeah. You should always. क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है शेयर्स में डूबते हुए, प्रॉब्लली इस वजह से भी लोग बहुत डरते हैं एंड करोड़ों में डुबा. ऑफ कोर्स उन्होंने बनाया होगा उतना तभी गवाया ना. वो साइकोलॉजी फॉलो नहीं करते, आपको ग्रीड रुकानी पड़ेगी. सो द ग्रीड इज रॉन्ग. ग्रीड इज रॉन्ग, राइट. ग्रीड होनी चाहिए बट इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो आपको डुबा दे. रिस्क के साथ. हाँ, राइट. The greed is good as long as it's giving you profit. Yes. The greed is bad, it is just actually messing up things in your business. You know, when you plan your trade, you apply one target, one stop loss. Okay. आपका टारगेट हिट हो गया, एग्जिट कर दो ट्रेड. डजेंट मैटर कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, डजेंट मैटर. आपको आपका टारगेट प्राइस मिल गया ना, एग्जिट कर दो. और लेकिन जो लोग रुकते कि नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, वो डूबते. आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, डजेंट मैटर कितना लॉस हुआ है, एग्जिट कर लो. आपके प्लान पे भरोसा रखो. भरोसा भरोसा हर चीज पे होता है, चाहे आप ये शेयर्स के लिए करो, हर चीज. दिस इज अप्लाइज टू एवरी फेज ऑफ लाइफ. बिकॉज देखो पहले तो आपको अपने आप पे भरोसा नहीं, अब बिजनेस पे क्या भरोसा. मैं तो पता है मेरे साथ बहुत कुछ होता है ना लाइफ में, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट. मैं कहती हूँ मेरा इंटेंशन क्या था, भरोसे का. अभी अगले ने भरोसा तोड़ा, वो उसका प्रॉब्लम है. एक्चुअली इन अ वे दे हैव टू मैनेज देयर कार्मिक अकाउंट. अब प्रोबेबली मैंने ऐसे कुछ करना चाहिए कि मेरे को डूबना था इनके हाथ. सो आई कीप टेलिंग देम डू द बिजनेस बट डोंट टेक इट ओवर योर हेड. राइट. क्योंकि पता चला कि वो एक साल वो जो लॉस आपने किया उसको करते करते हम लोग को हार्ट अटैक आ रही है, अटैक आ रही है, फिर कुछ फायदे का नहीं. यू नो, ट्रस्ट योरसेल्फ, डोंट ट्रस्ट पीपल, ट्रस्ट योर पोटेंशियल. वेरी इंपॉर्टेंट. आज कैसा होता है ना, आजकल बच्चे भी हमको बहुत कुछ सिखाते हैं. मेरी मम्मी हमेशा मेरे को बोलती थी एक्चुअली तो छोटी है लेकिन मैं घर में मतलब छोटी हूँ लेकिन मेरी सब सुनते. पता नहीं मम्मी को दादी माँ पैदा हुई हमारे. ऐसा देखो आपकी एज आपको डिफाइन नहीं करती, क्योंकि आपने क्या देखा है. आई मीट लॉट्स ऑफ पीपल, आई हैव लिव्ड अब्रॉड फॉर सो मेनी इयर्स. ऑफ कोर्स आई हैव बीन इन कांटेक्ट विद बाहर के लोगों ऑन द इंटरनेशनल लेवल. हमारे इंडियंस हो, मतलब सबसे पाला पड़ता है. लोअर प्रोफाइल पे काम करने वाले, हाई प्रोफाइल पे काम करने वाले, आपके कोलीग्स, आपको सबसे सीखने मिलता है. आई लर्न फ्रॉम पीपल. So that is why I have the experience. So my mom always wonders, how do you learn? I said, see, because at this point may help you. You cannot be compact. आपको थोड़ा तो एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा. देखो ऐसे जरूरी नहीं कि हमें लोगों से डिटैच ही हो, मतलब एक रूम में बंद करके कि नहीं मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको उनके साथ जाने की. लेकिन आपको समाज में है तो आपको लोगों से हाय हेलो तक रखना ही पड़ेगा. एंड नॉट जस्ट हाय हेलो, बिकॉज यू गेट टू लर्न ऑल्सो. Like I met you yesterday, I'm learning. Since yesterday I've been learning from you कि wow ऐसा भी होता है. Because every person you meet, it's the way you take it as. I take it as it is. Now you are so younger to me, but I'm so inspired. Actually I'm inspired by every guest who comes. मतलब धमाकेदार स्टोरी होती है सबके पास. ऐसा सबका एक जर्नी. Now if I see my daughter, you know the way she will grasp the things and analyze. So I told you the yesterday's incident, right? मैं कल कुछ ढूंढ रही थी, मुझे नहीं, तो इसको मैंने कमेंट कर दिया था. मैं एक्चुअली मफिन्स बना रही थी, तो नहीं मिल रहा मुझे मफिन. So can we drop it? But then I said I've told her already, so I don't like to then say no. तो मिल गया 2 मिनट में. But then there was a super mess in the house. And then again I got the other tray also, which was a star shape. I was baking a cake for. So I said, can we make in this? So she is like, dicey thing. Then I realized that the batter is too much. So probably the muffin won't be enough in that particular tray. So I told her, we will make in the start tray. तो खुश हो गई. तो उसने मेरे को रात को पता है क्या बोला, why I'm sharing this is because the story is. वो मुझे बोलती है मम्मा अभी 7 साल की बच्ची क्या ऑब्जर्व करी. बोल रही है आपको ट्रे नहीं मिला, अगर आप चाहते तो आप छोड़ सकते थे, राइट?
but you did not leave it. You kept searching for it. In this, what she learned, never give up. Yes. It is not just about the muffin tray, okay? Because she always sees me. मैं गिव अप नहीं करती जल्दी, मतलब मैं पहले पूरी कोशिश करती हूँ कि और ये मैं जो जो करती हूँ वो सब कुछ देखती हूँ. So I have to be very careful of whatever I'm doing in front of my daughter. Even my husband, I tell him, see, she observes a lot, be careful. I tell her, no, observe. Because कब ये मैडम कहाँ से क्या हो जाती है. So see, this is a good part that your kids are so smart. You all know what to grasp. The qualities which you're mentioning about your parents. Many kids don't even know about it. Yeah, right. Do your friends realize this? I'm sure not. I'm sorry to say, but आजकल की generation taken for granted in every way. Right. उस सिचुएशन में क्या होता है ना, आप लोग रॉन्ग ट्रैक पे चले जाते हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल मम्मा ने डाला, क्या लगता है मम्मा को शौक है डालने. ऑब्वियसली फॉर समबडी इज गुड. हम लोग ने भी डांट दिया, हम लोग को तो बेल्ट से मारा जाता था, चप्पल से मारा जाता था, क्योंकि इनको तो जो मिलता था मार डालते थे. तो हम लोग को थोड़ी अपने पेरेंट्स से हेट है. मैं थोड़ी मम्मी को जाती बोलती थी आपने मेरे को बचपन में मारा था तो मुझे आपसे नफरत है. एवरी पेरेंट डज इट फॉर द राइट लाइफ ऑफ अ चाइल्ड. बट आजकल के बच्चे लोग इतना उसको हाइप पे लेके जाते हैं ना, then they try to commit suicide or they get into the wrong friendship. उनको लगता है कि उनको कोई ऐसा कभी नहीं हो सकता है. पेरेंट्स कैन नेवर एवर नेवर एवर hate you. Right. You're a part of them. Yeah. है ना. माँ बाप खुद मर जाएंगे लेकिन बच्चे पे कुछ नहीं होगा. Right. मुझे तो नहीं पता है ऐसा कि कोई पेरेंट जानबूझ के अपने बच्चे की तबाही करेगा. नॉट दैट आई नो. पता नहीं बाहर होता होगा तो मैं वैसे मैं खुद ही एक अपने अलग वर्ल्ड में रहती. ऐसा नहीं होता है. आई एम नॉट सेइंग दैट द किड्स आर रॉन्ग. आप लोग की जनरेशन में पता है बहुत सारा प्रेशर है. इनफैक्ट द बेस्ट थिंग फॉर यू ऑल इज to make your parents your best friends. Yeah. You know, on those days, my dad was my best friend. I used to call him my boyfriend. I used to call him my best friend. Guys used to propose me. I used to go and tell him, Papa, आज पता है ऐसा हुआ. He used to look and laugh and क्या? I said, आपने ये बोला कि मुझे घर पे आके सब पता ना, मेरे को तो एक्चुअली सच्ची पता नहीं कुछ समझ. हम लोग बहुत सिंपल थे. हम लोग के टाइम पे ये सब होता, हम लोग को डर लगता था कि बाप रे ऐसा कुछ होता है लाइफ में. आजकल आप लोग को सब पता होता है. हम लोग के टाइम पे बहुत बिग डील होती है कि अगर मार्केट में किसको पता चल गया ऐसे हो रहा है जरूरत तो है ऐसा बोलना, मतलब अलग ही भागते थे हम. सो लाइक योर पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स इफ यू मेक them. Yeah. My parents are my best friends. You know why you like your own space? Because you enjoy with your parents. Right. Obviously then you enjoy at your home because you're happy with what you're doing. So this all gives you a beautiful relationship with your family and with yourself, and automatically creating a positivity everywhere. I barely knew about it because we moms we meet ना हमारा अलग ही बातें होता है जी कहाँ है जो कहाँ. So she kept telling me, मैं कहा ठीक है. So when I spoke to her, I said, wow, कितना सा बच्चा उसको कितना कुछ पता है. So good. You're just so clear about your life. हम लोग नहीं. आफ्टर मैंने पता है साइन किसकी की, मेरी बहन ने जो साइन की मैंने वो कॉपी की. मेरी बहन ने कॉमर्स लिया इसलिए मैंने कॉमर्स लिया. मतलब मेरे भाई ने वो क्या, हम लोग को सच में आप करना. एटलीस्ट मेरे को तो बिल्कुल नहीं थी. आई नेवर न्यू व्हाट आई हैव टू डू. पापा ने बोला आपको ये कोर्स करना है, कर ठीक है कर. बट वन थिंग आई डिड नॉट डू. माय डैड सेड यू डू सी. बोला प्लीज मैं इतना पढ़ने मिलने वाली नहीं, मेरे से नहीं होने वाला. बट मुझे अभी ये सब बहुत बार लगता है बिकॉज आई लव कुकिंग. काश ये लोग थोड़ा समझ लिया होता, मेरे को शेफ में का कोर्स सिखा दिया होता. तो इसलिए मैं लगी सी हाँ ओके आई एम नॉट अ शेफ बट एटलीस्ट आई एम अ शेफ एट होम. लेट मी लर्न. तो ये मेरे एक्सपेरिमेंट सब करते चलते. आई लव इट. तो मेरा पैशन कुकिंग. तो दैट इज हाउ वी एंजॉय. सो नाउ व्हाट इज योर लास्ट मैसेज फॉर आज के जनरेशन के बच्चे एंड फॉर a message with regard to investments or shares? Okay, in investment, I can say that it's not really easy, but if you love that, I personally love making money. I don't love anything else,
I just love making money. So that's my passion. And when you work towards your passion, it becomes your hobby. And it eventually helps to grow you and you become a better person. And you should really learn to be alone. Like even if you don't have anyone in your life, you shouldn't be depend on that. You shouldn't be sitting and crying. You should know your self worth. Most important. You really, you should learn to be alone. I've read that book, The Art of Being Alone, and it really helped me. It showed me how you can be yourself. Okay. When you sit with yourself, no, आपको अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चलती हैं जो शायद सोची भी नहीं थी. मैं इसे अभी जानने लगी. Okay, and what is the message for elders or anybody who wants to share का जो fear है, आपने डिसिप्लिन कर दिया तो सब कुछ हो गया, और आज की जनरेशन के बारे में क्या है, उनको क्या करना चाहिए आप जैसा बनने के लिए? I'm no one special, but it's just like my vibe is different. My vibe is kind of self growth, self development, making more money, making my parents proud. That's my vibe. I don't usually mix up with people who are into intoxicants or clubbing, partying. I don't go with them. That's not really me. And I think it's okay. It's okay, and I'm really happy that that's not me. I'm really happy. If intoxication is helping you, I think then I also should have been like, मैं को तो चाय पीने नहीं intoxication लेकिन चाय छूटती नहीं because we believe we are on the path of the Krishna journey, so we are trying ये cut off करो. It's a long way to go, but then at least we are trying. मेरा सिर्फ एक चाय पे ही गाड़ी उठती है, but it's really very good to know that you are very clear and very ambitious and very focused on what you want. I wish all the kids are like you. So when my daughter grows, I will send her to you. Sure. She's like my sister. Get trained. No, really. Actually, you should do something whenever you get time. You should do some sessions where you encourage kids. ऐसे जरूरी नहीं कि आपको वो शहर सिखाना है, लेकिन क्या होता है पता है, जो दीदीज होती है ना, वो जब बच्चों को बताती है ना, तो उनको बड़ा प्राउड होता है, देखो दीदी ने आज मुझे. Once you become their favorite, nothing like it, because we used to do that. My sisters age group, वो लोग जो बोलते थे ना, हम लोग ऐसे ही करते, मतलब ब्लाइंडली. मैंने कहा हमको अक्ल नहीं थी, because हमको क्या लगता है ना, छोटे बच्चे को क्या लगता है, उन्हें किया है ना, वैसे भी दीदी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगी. So they are also relaxed and they get to learn. It is very important that the elder siblings be the role models for the younger ones, because younger ones are already too demanding, cranky and जिद्दी सब कुछ है. तो जब आप जैसे बड़े सिबलिंग होंगे तो it's best. So we've had a very beautiful talk with you. I'm so happy and I'm so proud of you actually. Actually, I'm more proud of your parents also for such a beautiful upbringing. All the credit goes to them. Of course, to you also, because of them you are there, going on such a beautiful path. And yes, it is also your initiative to choose that path. You could have gone against it also, but you chose to be on the right path. So that is what I want the viewers to see. The idea of this show is not to comment in a wrong way to anyone. हम किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हम जब ये सारे बातें डिस्कस करते हैं या क्वेश्चंस पूछते हैं, ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि आजकल की जनरेशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रही है, और आपको राइट पाथ चूज करने में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं. तो अपने पेरेंट्स को बेस्ट फ्रेंड्स बनाइए, आपके फैमिली में बहुत अच्छे से रहिए, बिकॉज I don't miss out going out. My mom is like my best friend, and I go to my mom's house like, "Mommy, let's sit. हम लोग गप्पे लगाएंगे, ये होगा, वो होगा, शॉपिंग करेंगे." मतलब within the family. So make your family your best friend. Focus on your goals and see how inspiration. Actually, पता नहीं मुझे तो आज inspiration भी कम ही पड़ रहा है, infinite inspiration हो रही है. And we learned a lot from you. Thank you so much for being on the show. Thank you very much. Thanks for inviting. Thank you. Thank you all the viewers for your time. Thank you. Hare Krishna.